Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. My very dear friends, very good morning, everybody here in this classroom and online students who are viewing our videos across the world. So, guys and girls, today we are going to learn something about conversation. We'll have the training first. I'll give you the training how to read in an immaculate manner every dialogue, every sentence, and then you will do the practice. For example, the spirit, I will let you know with which every sentence should be spoken. You must speak the sentences accordingly after the training is over and your practice will start. Okay. So, conversation is the most amazing way of learning a language. You know, day-to-day situations you have to interact with, they can be conversed. They are actually given in the shape of dialogues here at this platform. For example, here the students of IELTS, PTE, and other international tests would like to move abroad for further higher education. So our today's conversation is based on a communication between two friends about traveling abroad for higher education. So that's it. We'll also let you know the sentences spoken by both of the friends, and I will let you know about the grammatical aspect and intonation, how the sentences should be spoken, किस तरह से आपने बातचीत में बातचीत को कंटिन्यू करना है while speaking these sentences. All right? So here you go. Yes, please let me know about the sentences one by one. I will give you the accuracy and you will practice it later. Yes, please. Hey Liva, have you finalized your planning for studying abroad? Hey, Laiba. Hey, kind of salutation. And तवज्जो हासिल करने के लिए हाय ये भी acceptable है. Hey, ये भी आप greet करते हैं किसी को. For greeting, it is spoken. Hey, hey, Laiba. Have you finalized your Plans for studying abroad. Have you finalized? Finalize is a verb. Finalized is the third form, past participle form, the third form of the verb. Right. Have you finalized? और tense कौन सा चल रहा है? Present perfect tense. Have you finalized? और ये interrogative sentence है. चूंकि question है, तो interrogative sentence होगा. सवालिया जुमला है. Have you finalized your plan Studying abroad. for studying abroad? For जब आपने लगाया है उसके बाद verb की first form के साथ ing आप place करेंगे. जितने भी prepositions हैं उनके बाद आप first form ing लगाते हैं और exception to की है, लेकिन to में भी sometimes आप first form ing लगाते हैं. जब कोई phrase बोल रहे हैं आप और to उस phrase का अगर हिस्सा है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे. अदरवाइज आप to के बाद फर्स्ट फॉर्म ही प्लेस करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू. सी यू नहीं है, सीइंग है, चूंकि टू फ्रेज का हिस्सा है. अदरवाइज टू के बाद आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू सी यू. राइट. टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं. तो फोर के बाद फर्स्ट फॉर्म ing इस्तेमाल करेंगे. राइट सेंटेंस क्या था जी? Have you finalized your plans for studying abroad? हाँ, have you finalized your plan for studying abroad? आप ऊपर से देख के मुझे बताएंगे एक सेंटेंस क्लैरिटी के साथ प्लीज. अभी आप ट्रेनिंग मोड में हैं, हम अंडरस्टैंड करें. Have you finalized your plan for studying abroad? Studying abroad पर स्ट्रेस देंगे आप. Hey Sarah, have you finalized your plan for studying abroad? Studying abroad, right. इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे
एक सेंटेंस के अंदर एक इंटोनेशन नामी एक चीज होती है, राइज एंड फॉल ऑफ द टोन। जब टोन को आपने ये देखना है कहां राइज करेगी कहां फॉल करेगी। मोटे मोटे उसूल तो ये थंब रूल्स ये हैं, थंब रूल्स ये हैं कि आपने नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को और वर्ब्स को और एडवर्ब्स को आपने जो है वो राइज करना है और टोन उसकी कदरे बुलंद होगी और स्ट्रेस करना है आपने। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको आपने अनस्ट्रेस्ड रहने देना है। तो इस तरह से आप जो है वो स्टडी अब्रॉड, चूंकि इसमें सेंटेंस में सबसे कीमती कोलोकेशन है, कोलोकेशन स्टडी अब्रॉड। ये कोलोकेशन क्या होता है? दो ऐसे वर्ड्स जो कि नॉर्मली इकट्ठे ही बोले जाते हैं। नॉर्मली स्टडी के साथ अब्रॉड, अगर बाहर की बात, फॉरेन एजुकेशन, राइट। सो ये कोलोकेशन होगा। दो वर्ड जो कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ बोले जाते हैं और वो साथ साथ आते हैं तो वो दे आर कॉल्ड कोलोकेशंस, राइट। I beg your pardon. So, have you finalized your plan for studying abroad? Finalize your plan for studying abroad, right? Like this, Ji. Not yet, Rubab. I'm still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you? Right. आप ही बोलते जाएंगे अभी ट्रेनिंग के लिए, बाकी प्रैक्टिस हम बाद में करवाएंगे बाद बच्चों से। जी, ये क्या है? Not yet, Rubab. Not yet. देखिएगा, अगर आपने सवाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव यू फाइनलाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवाल हुआ है, तो जब जवाब देंगे अगर आपका जवाब नहीं में है तो नॉट येट, अभी नहीं किया मैंने, राइट। मतलब इट्स नॉट सो फॉर डन, अभी तक नहीं किया मैंने, तो नॉट येट रुबाब या सारा। I'm still deciding between Canada and I'm Australia. still deciding. Hello, deciding. I'm deciding. Present continuous tense है, progressive tense है। जब कोई काम आप continuity में कर रहे होते हैं और for temporary purpose होता है तो present continuous tense में। For example, I'm teaching right now, तो मैं teaching एक temporary एक activity होगी, but not I'm teaching for the whole day. वैसे मेरी ड्यूटीज तो होती है वो मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में होती हैं, अदरवाइज you teach for a short span of time, so it's a temporary activity. Present continuous tense जो present progressive tense होता है उसको आप for limited time period की activity के लिए इस्तेमाल करते हैं। So I'm still deciding, the process is going on, I'm still deciding Between Canada and Australia. between Canada and Australia. She's split, अभी वो stuck है between Canada and Australia. She hasn't decided so far. अभी उसने फैसला नहीं किया, अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोसेस, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। Both have great universities. I'm still deciding between Canada and America, Canada and Australia. Still deciding पे आप still deciding वर्ब पे आपने स्ट्रेस किया। between Canada and Australia, ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, नाउन से इनके पर स्ट्रेस करेंगे आप। आगे, Both have great universities. Both have great universities. both have great universities. अब यूनिवर्सिटीज के प्रोनाउंसिएशन को आपने ठीक बोलना है, बहुत अच्छा तगड़ा प्रोनाउंसिएशन आपका होगा और सही आपने उसको अदायगी ठीक होगी तो आपको इम्पैक्ट और इम्प्रेशन बहुत पॉजिटिव होगा। So I'm still deciding between Canada and Australia. Both have Great universities. Both have great universities. Both have great universities. Universities. ये इतने university, चार इसके आपने syllables बनाने हैं। यूनिवर्सिटी है तो सिंगुलर होगा और यूनिवर्सिटीज है तो प्लूरल नाउन होगा। बोलना आपने है both have great university। जब आपने प्रैक्टिस, आप बोल रहे बोलेंगे, ट्रेनिंग हो रही है, जब आप बोलेंगे इसी सीक्वेंस, इसी स्टाइल, इसी मोमेंटम के साथ आप बोलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें, और ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी हम दरखास्त करते हैं जब हम प्रैक्टिस करें तो आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्वर्सेशन और एक्सेंट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन। सो हमारे पास यही एक मीडियम है आपसे कम्युनिकेट करने का। अदरवाइज वी डोंट हैव टाइम to give you exclusive classes
and these guys and girls are, mashallah, very lucky enough to be the part of the Genius Institute Lahore, and they're taking on on-campus physical classes. Are really obliged. We are really happy about your progress, mashallah. Yeah, they're performing, they're progressing, and they deserve now the Genius. What is the award name? Genius Star Award. Yeah, they claim Genius Star Award. हमारी convocation पे soon approaching on Saturday, inshallah ta'ala. We are going to give them the awards, और award ceremony की highlights जो होंगी वो भी हम online viewers के लिए जो है वो share करेंगे inshallah ta'ala. All the very best of luck. Yes, please, the next. What about you? What about you? What about you? आप अपने बारे में कुछ बताइए. What about you? जब आप अपना शेयर करते हैं कुछ एक्सपीरियंस, या मतलब आप रहते हैं, for example, I live in Lahore. Yeah, I'm from Lahore. I'm from अगर आपको देख, what about you? Where are you from? Right? What about you? आप पूछ रहे हैं अपने बारे में कुछ बताइए. What about you? जी, what about you? स्टाइल ऐसा होगा आपका. जी. I have been thinking about the UK. I have been thinking about the UK. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जब आपने एक एक्टिविटी का आगाज किया, अभी खत्म नहीं हुई है, ये शायद अभी प्रोसेस के अंदर मौजूद है. आगाज किया, मैं सोचता रहा हूं. राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है. मुकम्मल भी हो चुका है और साथ कुछ अरसे के लिए प्रोसेस के अंदर भी रहा है. तो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है. So I have been thinking about, मैं सोचता रहा हूं किस चीज के बारे में? UK. I have been thinking about UK. UK. I've been thinking about UK. मैं UK के बारे में सोचता रहा हूं. They have shorter master's programs. They have shorter master's program, shorter, निस्बतन कम वक्त के टाइम स्पैन के प्रोग्राम्स होते हैं उनके. Normally 1 year प्रोग्राम होता है मास्टर्स लेवल का. अगर आपने 4 years का ग्रेजुएशन किया हुआ, बैचलर्स किया हुआ है, नॉर्मली होते हैं अब 4 years का है. अब पास के माजी में पाकिस्तान में 2 years का था, बट it's not highly recommended now to do the graduation bachelor's of 2 years. और across the world 4 years के बैचलर्स प्रोग्राम डिग्री होती है. और after that UK offers you 1 year master's level degree, और shorter प्रोग्राम हो जाएगा वो. जी, no. And the universities are highly ranked. And universities are highly ranked universities हैं. And universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. That's true. सच्ची बात है. Plus, the UK has Rich culture and history. the UK has rich culture. Hello, it's not culture. 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 Rich culture and history. What course are you planning to pursue? What course are you planning to pursue? What course are you planning? ये continuous tense है. What course are you planning? अच्छा, जब आप बोलेंगे conversation इंग्लिश में, बोलचाल की इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में, तो आखिर वाले जी को भी आप माइनस करेंगे, आखिर वाले आर को भी माइनस करेंगे, आखिर वाले टी को भी आप माइनस करेंगे. मतलब बहुत ही नॉमिनल किस्म की है, बहुत कम तरीन आवाज उसकी आएगी. और आप देखेंगे, इफ यू कीप ऑन एक्टिंग ऑन दीज स्टेप्स, you'll start going very close to the native speakers. तो नेटिव स्पीकर्स के करीब करीब जाना शुरू हो जाएंगे आप. ऑलराइट जी. I'm looking at a master's in data science. अमेरिकन आखिरी आर को या किसी भी आर को बोलती हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर बहुत सारी जगहों पे साइलेंट होता है. ऑलराइट जी. I'm looking at a master's in data science. I'm looking at Masters in in data science. Very, very popular degree these days, and very fascinating because it's a degree of the future. Data का ताल्लुक जो है वो data science का ताल्लुक आपकी AI के साथ है, और AI is a hot cake these days. और इसलिए data science masters करना is a wonderful program. Right. So I'm looking for data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. It's a growing field. अब देखिए, मैंने बताया आपको AI से related है. It's a growing field and
Job opportunities are Job opportunities. Opportunity की बजाय opportunity. ब्रिटिश क्या आती है opportunity और अमेरिकन से opportunities. स्ट्रेस दे देंगे, लेकिन आप ब्रिटिश इंग्लिश को ही आप फॉलो करें. This is standard English and it's accepted across the world and it's the most beautiful English. लेकिन जहां जहां रिडक्शन कॉन्ट्रैक्शंस की बात होगी वह हम अमेरिकन के साथ से फॉलो करेंगे, बिकॉज दे आर हाईली पॉपुलर विद इन इवन द ब्रिटिशर्स. वो इंग्लैंड में भी बहुत पॉपुलर हैं उनकी रिडक्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस उस लैंग्वेज की. वो भी हम बात करेंगे, उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे जी. How about you? How about you? What about you? एक ही बात है, एक ही सेंस में बात होती है. जब अपने बारे में कुछ बताइए. How about you? आप अपने बारे में कुछ बताइए. I'm planning to do. For example, I'm planning to go to the seaside this afternoon. Yeah, what about going to the seaside this afternoon? कैसा रहेगा seaside पे जाना इस afternoon को? आप किसी से पूछ रहे हैं, वो कह सकते हैं that sounds great. ये आपको आइडिया किसी का बहुत अच्छा लगे, आपको इनविटेशन बहुत अच्छा लगे किसी का, आपको किसी की सजेशन बहुत अच्छी लगे, तो आप कहते हैं that sounds great. That's a good idea. Good और आइडिया को मिला देंगे आप, क्योंकि पता है आपको डी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, आई वाउल साउंड है. जहां फॉलो करेगी कॉन्सोनेंट के बाद वाउल साउंड, तो दोनों को लिंक कर देंगे. राइट? सो लिंकिंग वर्ड से क्या होती है? म्यूजिक ऑफ इंग्लिश प्रोड्यूस होता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लिंक द वर्ड्स. इट्स अ गुड आइडिया, नॉट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स अ गुड idea. No, English won't speak like this. They would say, that's a good idea. That sounds great. अगर आपको उनको आपकी अच्छी बात लगी है तो. Right. I'm planning to do an MBA. Canada seems like a good I'm planning to option. do an MBA. I'm planning to do an MBA. MBA, right? Canada seems like a good option. Canada seems like a good option. Seems like present tense, indefinite. Seems like a good option. Canada subject है और subject verb agreement करना है. Subject के साथ verb seem नहीं होगा, क्योंकि Canada singular है, इसलिए उसका verb जो होगा first form ing, first form के साथ s का addition करेंगे आप. तो Canada, लेकिन वो भी आपको पता ही है present indefinite में he, she, it या singular nouns के साथ होता है. अदरवाइज आई वी दे यू या प्लूरल नाउन के साथ सीम ही लगेगा, उसके साथ एस का एडिशन नहीं होता. यस प्लीज. Because of its post-graduation work permits and friendly immigration policies. Because of its Post-graduation work permit. because of its post graduation work permits. आप जानते हैं कनाडा जो है बहुत लुक्रेटिव डेस्टिनेशन हो सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद उनकी बहुत ही लीनियंट इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, जो कि आपको वर्क परमिट और फिर लेटर ऑन आपको जो है वो परमानेंट और फिर परमानेंट वीजा, और उसके बाद फिर आप नेशनलिटी की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो कनाडा कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर लिविंग for the students who complete their education, right, of any level, especially of master's degree. That's a smart choice. That's a smart choice. तो कनाडा में आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सूट करते हैं, और हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए. और हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन को भी डील कर रही हैं बहुत इन एन इमैक्युलेट मैनर्स, इन अ फैंटास्टिक मैनर्स, और आपको स्मूथ सेलिंग के साथ सारी गाइडेंस कोचिंग देंगे, और उसके बाद हम जो है वो उसको परस्यू करेंगे. यस प्लीज. Have you taken the IELTS or any English test yet? Have you taken present perfect tense once again, the IELTS test or any international test? IELTS is IELTS, International English Language Testing System. So it's a test compulsory for work permits, immigration, and student visas. And IELTS is highly ranked test of English. It's acceptable everywhere in the world. बाकी कुछ टेस्ट हैं, कहीं कुछ एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं एक्सेप्टेबल हैं, और कुछ वर्क करते हैं, कुछ फंक्शन नहीं करते हैं, कुछ इमिग्रेशन में चलते हैं, कुछ वर्क परमिट्स में चलते हैं, कुछ जो है स्टूडेंट्स
वीजास के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स फंड वीजास में कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती. IELTS इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर. यूनानिमस डिसीजन है यूनिवर्सिटीज का. Thousands and thousands of universities are accepting this test, or UK, Australia, Canada, America, Europe, everywhere is acceptable. English language proficiency of international level test hota hai. Ji, please. Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. Oh my God, yeah, उन्होंने Genius Institute Lahore से किया होगा IELTS. That's why it's acceptable, and it's she scored 7.5 band scores. जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं उनके लिए 6 बैंड्स एटलीस्ट होना जरूरी है अक्रॉस द वर्ल्ड. और जिन बच्चों ने अप्लाई करना होता है मास्टर्स लेवल डिग्री के लिए 6.5 बैंड स्कोर जरूरी होते हैं. डॉक्टर्स और मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनकी 7 बैंड्स की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट होती है. और फिर इमिग्रेशन के लिए 8777 और टाटा 7 अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए तो टाटा 7 मीन 7777 चारों मॉड्यूल में आपके 7 होने चाहिए. लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. अगर आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जाना है तो फिर ये वेरी कर सकता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन नॉर्मली क्या होता है 8777 जो है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इमिग्रेशन टू कैनेडा. सो आपके जितने अच्छे बैंड स्कोर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है वो ऑप्शंस और प्रोबेबिलिटीज बनती जाएंगी. इसलिए वर्क रियली वेरी हार्ड to get the highest band scores at the platform of Genius Institute Lahore, inshallah ta'ala. Yes, please. What about you? What about you? Once again, अपने बारे में कुछ बताइए. What about you? What about you? Right. I have registered for next month. I have registered for next month. उसने next month के लिए register कर लिया है. Hopefully, I'll do well. Hopefully, I'll do well. I'm into the mock test these days, and I'm working very, very hard. Working on the tips and tricks are given by our teachers, mentors, and trainers. So, ready. By the way, do you know how to manage the application process? By the way, do you know? Not you. By the way, BTW, sorry. By the way, do you know How to manage? the application process? Application process को कैसे manage करना? Once again, Genius Visa Express will help you out in acquiring your visas, fast track visas. Okay. By the way, do you know How to manage the how do I manage the application process? I have यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो, आपकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना हो, आपकी जो पूरी फाइल प्रिपरेशन हो, जीनियस वीजा एक्सप्रेस इज गोना हेल्प यू आउट प्रोवाइडेड यू हैव डन IELTS. आपने IELTS कर लिया है, उसके बाद नथिंग इज डिफिकल्ट. इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट इन गोइंग टू UK, Australia, Canada, America, lots of countries of Europe, and these days we're also going to have some sort of work permits to European countries like Lithuania and Hungary, right? So we'll be just giving you information regarding all that stuff later. So it's easy to acquire your desired destination visas. लेकिन अगर आप उसको बहुत ही technically speaking, you are sound and professional. Genius Visa Express is highly recommended. Inshallah, it will help you out in every aspect of your visa processing. Yes, please. I have consulted a student visa consultancy. I have consulted a student visa consultancy. They are helping me with university applications and visa documents. They are helping me With university applications. with university application and visa documents. visa documents. That's great. I might need their That's great. That sounds great. That's a good idea. I might need their help too. need their help too. Might और may में difference जानते हैं आप. may इस्तेमाल करते हैं आप इम्कान के लिए 50%, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और might कम इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं आप. I might need
इम्कान कम है लेकिन मुझे मुमकिन है जरूरत पेश आए 30%, और मे इज 50%, और आई मे वेल ज्यादा इम्कान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं 70-75%, राइट। आई माइट नीड देयर Help too. I might need their expertise or help too. मुझे भी उनके too पे स्ट्रेस है, आप मुझे जरूरत पेश आए उसकी। I might need their expertise and help too. Right. Traveling abroad feels exciting but also a bit overwhelming. Traveling abroad Feels exciting. is really exciting, बहुत exciting काम में चीज है, but Also a bit overwhelming. also a bit overwhelming. I mean, छा जाने वाला, डोमिनेट करने वाला एक्सपीरियंस है। तो आप जाते हैं, स्टूडेंट्स आर मूविंग अब्रॉड, जो आइल्स करने आते हैं, अब उन्हें यही ख्वाब आते हैं कि मैंने कैसे बाहर जाना है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के बेहतरीन सर्विस क्या क्या, वहाँ की फैसिलिटीज क्या क्या हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, मैंने ठहरना कैसे है, कहाँ है, मैंने जॉब कौन सी करनी है, खाने पीने के वहाँ से हवाले से वहाँ क्या वहाँ बिरयानी मिलती है, शौकीन जो लोग होते हैं, अम्मी के हाथ का मटन पुलाव, ओ माय गॉड, ये तो नहीं मिलने वाला आपको वहाँ कहीं भी। या आपको जो है वो जो भी आप बेहतरीन खाने खाते हैं सब्जियों और गोश्त के साथ बनाकर, या अम्मी जो बनाती हैं खाने, वैसे खाने नहीं मिलेंगे आपको। आप देखते हैं नॉर्मली बाहर जो बच्चे रहते हैं वो साल 6 महीने बाहर रहे या इवन 2-4 साल रहे तो बहुत अच्छे शेफ बन के वापस आते हैं, बल्कि अम्मी कहते हैं तुझे बैठो तो खाना बनाया क्या खाना ये इट्स हैपनिंग, ये होता है, क्यों नहीं ऐसे होता है? Yes. माशाल्लाह, थैंक यू। True, but it's a big step towards achieving our dreams. True, but it's a big step towards achieving our dreams. आप जानते हैं जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा तो उसने कहा इट मे बी अ स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, कि इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है जो चांद पर रखा है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है कि चांद तक रसाई हासिल कर ली है। हाँ, इसीलिए कहते चंदा मामू दूर के जी। Let's keep motivating each other. Let's keep motivating. Keep के बाद आप फर्स्ट फॉर्म का था ing लगा रहे हैं। Let's keep motivating each other. और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि हम जो है वो कहीं भी हमारा यकीन तसलजुल का शिकार ना हो और कहीं लड़खड़ा ना जाएं कहीं भी, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं जी। Absolutely. Absolutely या exactly मतलब होता है बिल्कुल ऐसा ही है। Let's plan our journeys and stay in touch wherever we go. Let's plan our journey and stay in touch. Stay in touch. ये टच जो है इसको अगर आप यूके में लंदन में चले जाए तो स्टे इन टच की बजाय स्टे इन टच बोलेंगे। Let's stay in touch. I haven't seen such a person. Such a person, no, such a person. Such. So आपको बड़ी बड़ी छोटे छोटे वेरिएशंस का सामना करना पड़ सकता है। आप जब इंग्लिश कंट्रीज में जाते हैं वह थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती है लैंग्वेज की, उनके एक्सेंट के एतबार से, उनका जो अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है। अमेरिकन कुछ वेरिएशंस है यूके के साथ, ब्रिटिश इंग्लिश के साथ, ब्रिटिश की कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के साथ, और यहाँ जो इंडियन इंग्लिश है उसकी वेरिएशंस है बाकी इंग्लिश के साथ, और पाकिस्तानी इंग्लिश में अगर पंजाबी इंग्लिश की बात, अल्लाह, यहाँ तो हम इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं पिंग्लिश। बोल पूछे वो क्या है? पंजाबी इंग्लिश। हमारा जो है वो यहाँ हमारे आप देखिए वो नॉर्मली बोल रहे वेयर आर यू गोइंग, मतलब पूछ रहे कितने चले हैं, सो वो इस तरह से बोल रहे होते हैं, और डोंट वरी आई विल कम बैक सून, परेशान ना हो जल्दी वापस आ जाऊंगा। नॉर्मली वाइफ्स पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं आप, कब वापस आएंगे, कहाँ हैं, 10 मिनट लेट हो गए हैं, ओ माय गॉड। ऐसे टाइम क्लिक 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 कर रहा होता, टिक टिक कर रहा होता, जैसे एटम बम फटना है उसके बाद। वो कहता है परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। कहते रास्ते में कहाँ, वीडियो चला के दिखाए मुझे। ओ माय गॉड, जब इतनी ज्यादा हो जाती है पोसेसिवनेस तो फिर सांस और दम घुटने लगता है। सो एनीवे, पोसेसिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ पार्टनर्स को भी देनी चाहिए स्पेस एक दूसरे को, और एक ट्रस्ट लेवल बरकरार रखना चाहिए।
अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो यकीनन आप पे भी ट्रस्ट किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इससे चीज़ें आसान होती हैं। इस तरह से वी शुड गिव स्पेस, वी शुड ट्रस्ट, वी शुड गिव कॉन्फिडेंस टू आवर लाइफ पार्टनर्स। दोनों की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, राइट राइट। रेसिप्रोकल होता है, चूंकि लाइफ चूंकि जुड़ गई है तो काम भी रेसिप्रोकली होना चाहिए उनका। सो ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। योर ट्रेनिंग सेशन इज ओवर, वी गोना स्टार्ट नाउ द प्रैक्टिस सेशन। मेरे लिए क्लैपिंग ही नहीं की, मैंने इतना बताया आपको। कह के करवाई क्लैपिंग तो क्या करवाई। चलिए पॉज करेंगे प्लीज। Hey Laiba, have you finalized your plans for studying abroad? Not yet, Rubab. I'm still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you? What about you? What about uni? What about you? What about you? I have been thinking about the UK. They have shorter master's programs and the universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I am looking at a master's in data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. How about you? I'm planning to do an MBA. Canada seems like a good option Canada seems like a good opportunity. because of its post graduation work permits and friendly immigration policies. That's a smart choice. Have you taken the IELTS or any other English test yet? Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. What about you? I have registered for the next month. Hopefully, I'll do well. By the way, do you know how to manage the application process? I've consulted a student visa consultancy. They are helping me with university applications and visa documents. That's great. I might need their help too. Traveling abroad feels exciting, but also a bit overwhelming. True, but it's a big step toward achieving our dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely. Let's plan our journeys and stay in touch wherever we go. Deal. Best of luck with everything. Thanks, Laiba. Same to you. That's a good try. Shabash. Yes, please, start. She's speaking, you will behave like this. She's holding in the hand, and when she's speaking, you will put it forward to her mouth as well. Okay. Hey Sarah, have you finalized your plans for studying abroad? Not yet, Ali. I'm still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you? That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I'm looking at a master's degree in data science. It's a growing field, and the job opportunities are excellent. How about you? I'm planning to do an MBA. Canada seems like a good option, but because of its post graduation work permits and friendly immigration policies. That's a smart choice. Have you taken the IELTS or any other English test yet? Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. What about you? I registered for next month. Hopefully, I'll do well. By the way, do you know how to manage the application process? I have consulted a student visa consultancy. They are helping me with university applications and visa documents. That's great. I might need their help too. Traveling abroad feels exciting but also a bit overwhelming. True, but it's a big step towards achieving our dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely. Let's plan our journeys and stay in touch wherever we go. Deal. Best of luck with everything. Thanks, Sarah. Same to you. Thank you. Is she ready to? Not ready? No. No? Okay, you will read it alone, please. Hey Sarah, have you finished your plans for studying abroad? Not yet, Ali. I'm not still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you?
I've been thinking about the UK. They have shorter master's programs and the universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I'm looking at masters in data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. How about you? Well, I'm planning to do MBA. Canada seems like a good option because of its postgraduate work permits and friendly immigrants policies. That's smart choice. Have you taken the IELTS or any other test yet? Yes, I scored a 7 on IELTS last month. What about you? I have registered for next month. Hopefully, I will do well. By the way, do you know how to manage the application process? I have consulted a student visa consultancy that's helping me with university applications and visa documents. That's great. I might need their help too. Traveling abroad feels exciting but also a bit overwhelming. True, but it's a big step toward achieving your dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely. Let's plan our journey and stay in touch wherever we go. Deal. Best of luck with everything, Ali. Thanks, Sarah. Same to you. Fantastic. Very nice. That's a good performance. Really, you have tried your level best to read every dialogue with its real spirit and momentum, please. Okay, guys. Hey Ali, have you finalized your plans for studying abroad? Not yet, Rehan. I'm still deciding between. Excuse me, guys. Put the mic in front of him, please, now. Restart. No, it's all right. Not yet, Rehan. I'm still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. How about you? I have thinking about the UK. They have shorter programs and the universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich cultures and history. What course are you planning to pursue? I am looking at master in data science and it's a growing field and the job opportunities are excellent. How about you? I'm planning to do an MBA, and Canada seems like a good option because of its post-graduation work permits and friendly immigration process. That's great. Have you taken IELTS or other any English tests? IELTS. IELTS or other Not IELTS. IELTS. IELTS or other any English tests yet? Yes, I scored 7.5 on IELTS last month. How about you? That's great. I might need their help too. And tell me about do you know about this thing? How to manage the process of applications? I've consulted a study visa consultancy. They are helping me the university's applications and visa documents. Absolutely. Let's plan our journeys and stay in touch wherever we go. Deal. Good luck for everything. Thanks, Ali. Same to you. This is really appreciable because this pair have performed without looking at any assistance. They actually memorize the stuff. It's amazing, really, and I really appreciate them once again. They have performed good and they work really very hard at home as well. Big round of applause for them once again, please. Okay, now shifting the momentum towards the boys. Hey Faik, have you finalized your plans for studying abroad? Not yet, Muzammil. I am still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you? I have been thinking about the UK. They have shorter master's program and the universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I'm looking at a master's in data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. How about you? I am planning to do an MBA. Canada seems like a good option because of its post graduation work permits and friendly immigration policies.
That's a smart choice. Have you taken the IELTS for or any other English tests yet? Yes, I scored a 7.5 on IELTS test last month. What about you? I have registered for next month. Hopefully, I will do well. By the way, do you know how to manage the application process? I have consulted a visa consultancy. They are helping me with university application and visa documents. That's great. I might need their help too. Traveling abroad feels exciting but also a bit overwhelming. True, but it's a big step towards achieving our dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely. Let's plan our journeys and stay in touch wherever we go. Deal. Best of luck with everything. Thanks. Same to you. Hi Ali, how are you? Finalize your program for study abroad? No yet. I am still deciding between Canada and Australia, but have both have great universities. What about you? I've been thinking about the UK. They have shorter master programs and the university are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What courses are you planning to pursue? I'm looking at the master in data science. It's growing field and the job opportunity are excellent. How about you? I am planning to do an MBA. Canada seems like a good option because of its post graduation work permits and friendly immigration policies. Policies. That a smart choice. Have you taken Choice. That's a smart choice. choice? Have you taken the IELTS or any other English test? Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. What about you? I've registered for next month. Hopefully, I'll do well by the way. Do you now have to manage the application process? I have consulted a student visa consultancy. They are helping me with university applications and visa documents. University application and visa documents. That's great. I might need here help too. Traveling abroad feel exciting, but also I buy. True, but it's a big step towards achieving our dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely, let's plan our journey and stay in touch whatever we go. Yeah, deal. Best of luck with everything. Thank you. But I don't want to say you thank you because you've been आप reading भी जो है वो ऊपर से देख के proper नहीं कर रहे थे. This is really I must say that I'm really feeling unhappy about it. Please. Hey, Okay. Sarah. Okay, guys, the next pair. Hello. Look at us. Don't look look towards anything else. Yes, please. Start reading it. Hey, Sarah, have you finalized your plan for studying abroad? Not yet, Ali. I am still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. But what about you? I have been thinking about the UK. They have shorter master's program and the universities are highly ranked. I have been thinking about the UK. They have shorter master its programs and universities are highly ranked. I'm looking at a master's in data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. But how about you? That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I'm looking at the master's in data science. It's a growing field and the job opportunities are excellent. How about you? I am planning to do an MBA. Canada seems like a good option because of its post graduation work permits and friendly immigration policies. That's a smart choice. Have you taken the IELTS or any other English test yet? Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. What about you? I have registered for next month. Hopefully, I will do well. By the way, do you know how to manage the application process?
I have consulted a student visa consultancy that are helping me with universities, applications, and visa documents. That's great. I might need their help too. Traveling abroad feels exciting but also a bit overwhelming. True, but it's big step toward achieving our dreams. Let's keep motivating each other. Absolutely. Let's plan our journeys and stay in touch with each other. Sure. Best of luck with everything, Ali. Thanks, Sarah. Same to you. Thank you. Anyway, please now it's your turn, the last pair. Okay. Hi, Sarah. Have you finalized your plan for studying abroad? Not yet, Ollie. I am still deciding between Canada and Australia. Both have great universities. What about you? I have been thinking about the UK. They have shorted master program and universities are highly ranked. That's true. Plus, the UK has a rich culture and history. What course are you planning to pursue? I am looking at master in data science. It's growing field and the job opportunities are excellent. How about you? Opportunities. 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 I am planning to do an MBA. Canada seem like good option because of its post-graduation work permit and friendly immigration policies. That's a smart choice. Have you taken the IELTS or any other English test yet? Yes, I scored a 7.5 on IELTS last month. What about you? I have registered for next month. Hopefully, I shall do well. By the way, do you know how to manage the application process? Sarah, I have consulted a study visa consultancy that are helping me with universities, applications, and visa documents. That's great. I might need help too. Traveling abroad feel exciting but also a bit overwhelming. True, but it's a big step toward achieving our dreams. Let's keep motivated each other. Ali, absolutely. Let's play our journey and stay in touch what wherever we go. Sarah, deal best of luck with everything, Ali. Ali, thanks. Sarah, same to you. Thank you very much, guys and girls, for training, practicing it. You know, some of the students have shown extraordinary performance, and the rest of them couldn't even read properly. But I still believe that you're all learners. You must really work hard on everything we are practicing here. In this way, if you keep on working hard, you will become a confident, fluent public speaker because this conversational methodology is the best method of learning a language. We give you an opportunity for presentations and conversations. So conversations actually streamline your spoken English. After all, you have to interact with lots of people with the help of conversation. You interact with people, you give answers to the questions. In an organization, you have to interact with the interviewer when he's asking the questions. So this kind of, paired conversation can help you a lot in lots of walks of life and lots of places where you feel the challenge of speaking English. God bless you. Thank you very much. See you tomorrow with another exercise. Until then, stay blessed and be happy always.